हेलो स्टूडेंट्स मोटुल नाहा आज आम पूर्व जो क्लास होता थ्योरी जो जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिक फिटर से आज आम तार स्क्राइबर पाठ पढ़ा है। स्क्राइबर कौन तार व्यवहार केमती डाटा मिसलाइन अच्छे कैलिपर्स अच्छे से विषय आज आम डिटेल्स पढ़ा। तो चलो आज आम देखा आमर स्क्राइबर। हाँ स्क्राइबर देख आमर आसला आज देख देखो ये आसला मोर जो फिटर बेसिक फिटिंग आम चलता कोर्स आज तार आउ किसी पार्ट्स स्क्राइबर स्क्राइबर देखो ये मुझे डिटेल्स का कह दूँ तुमको एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू कौन कौन को स्टेट दैट द फिक्चर्स ऑफ स्क्राइबर रो फिक्चर्स कौन अछि पढ़िबा। स्टेट दैट यूज ऑफ स्क्राइबर आ स्क्राइबर आमे काहे की व्यवहार ए दुटा जिंस पर स्क्राइबर पूरा डिपेंड करै कौन फिक्चर्स कौन अछि स्क्राइबर आ स्क्राइबर हाउ टू यूज ऑफ स्क्राइबर स्क्राइबर केमती आमे व्यवहार करबा ए जे वर्क हला जे properly done to scribe how to they will be used केमती आमे तक यूज देखो स्क्राइब स्क्राइब देखो ई lay out what is it is necessary to scribe lines to indicate the dimension of the workpiece to be fit or machine lay out work गोटे मेटेरियल्स ऊपर आमे लेआउट वर्क करू लेआउट अर्थ कोन किछि लाइंस काटिबा ड्रॉ ए लाइंस इन ए जॉब हैला ड्रॉ ए लाइंस इन ए जॉब जोटा कि आमे गोटे जॉब ऊपर किछि लाइंस काटिबा कोन करछि द डायमेंशन ऑफ वर्क इज जो लाइन काटिबा ए जे जॉब हम गोटे दिया छै से ड्राइंग हमको दिया है से ड्राइंग अनुसार से वर्कपीस जो मटेरियल्स अच्छे जो कुछ तुम की गोटे सरफेस माने फ्लैट सरफेस पूरे मटेरियल्स दिया है तापर हम लाइन काटिया तो लाइन काटिया पूर्व तो किछि डायमेंशन अछि प्रति डायमेंशन को नहीं हम किछि स्टेप आकार रे ताको पैरेललाइज बा पैरेलल हो कि हॉरिजॉन्टल हो कि वर्टिकल हो कि इंक्लाइन हो कि डायगोनल हो एनी लाइंस यदि काटिया अछि तो आमे हेल्प ऑफ स्क्राइबर सहायता नउछु और कौन कहला this scriber is a tools used for this purpose scriber is a tools scriber is a tools that use in is a skill person or craft हमें समझते जिंदी गोटे पेन किबा पेंसिल रे जिंदी गोटे वर्क करछे गोटे नोटबुक रे सिंदी a scriber is a one type of pencil or pen that should be used in materials that should be used in material आमी सेटा कोन करछे मटेरियल से ऊपर स्क्राइबर को आमे पेंसिल भाबे एग्जैक्टली से वही यूज करछे तो पेन बनला पेंसिल भाबे की यूज करछे देखो तार पर्पस कोन अछि इट इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इट इज हार्डनेस एंड इज हार्डेड हाई कार्बन स्टील हमर अछि N.C.V.T हाई कार्बन स्टील HS मटेरियल अछि कि हाई कार्बन स्टील के कंपोजिशन मटेरियल्स जोटा कि हार्डनिंग करा जाय थाए हार्डनिंग अर्थ कोन ताको फ्लेम हार्डनिंग रो अपर फर्नेस हो जो प्रतिभा हो ताको पीछे हार्डनिंग हम देखि जो कुमार साल रे कुमार माने जो ताकर रोटर अछि बुले फ्लेम दे कि हार्डनिंग करते कंची बोलनी पानी मुडा होई पुनी आतर लगा से बोल भाबरे किछि प्रोसेस अछि से मटेरियल को हार्डनिंग करा जाय ए हार्डनिंग करिया मुख्य कारण मध्ये अछि मु कहिबी हार्डनिंग कोन पाई करे और कहिछि फॉर ड्राइंग क्लियर एंड शार्प लाइन तो ये जो देखो देखो फिगर का मैं तुम जे कह दउ जे स्क्राइबर फिगर का दिए हला स्क्राइबर फिगर का मतलब तुम जूम कर देखै कोन है स्क्राइबर देखो स्क्राइबर रो गोटो छै स्ट्रेट पॉइंट होछ तो एटा होछ स्ट्रेट पॉइंट एटा होछ गोटे बेंड पॉइंट एटा होछ ग्रिप ए ग्रिप का हमरो सब बार्लिंग होता माने डायमंड रो किछि सेट है जोटा कि दैट विल बी इजी टू वर्क टू इजी फोल्डिंग आमे करि परिबा इजी फोल्डिंग आमे जति करि परिबा और स्ट्रेट पेन साथे आ बेंड पेन साथे आमे जे पेन मा पेंसिल रे गोटे पेपर रे जति वर्क करथि बा टाउनले बा लाइन काटले एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हो
बेड लाइन ता साहाय्य आम लाइन काट एटा कोन ब्रीफ होइचे एक्जेक्टली डिवाइस को फोल्डिंग हो चल देखिए पाठ कोन अछि से विषय पाठ कोन एटी से देछि फॉर ड्राइंग क्लियर शार्प लाइन तो एठी किछि डिग्री अछि मु तमती कहि दउ छी डिग्रीटा गुडे स्क्राइबर रो ए गुडे डिग्री है जोडे कि 12 टू 15 डिग्री पर्यंत ए स्क्राइबर रे एंगल 12 to 15 degree every side each and every each side रे तो this side जे 12 to 15 degree तमरो अछि तो एटा हम बही अछि कि नै जानि किंतु एटा हम नोट कर देथो स्क्राइबर आउ थर कहि दउ छी हला स्क्राइबर रो जो स्ट्रेट पॉइंट एंगल अछि ता आउची 12 to 15 degree ई साइड रे मध्ये अछि ई साइड अछि आर मेड अप होछि हाई कार्बन स्टील मतलब मेड अप होछि हाई कार्बन स्टील मेड अप हाई कार्बन स्टील एंड दैट इज वेरी हार्ड मैन हार्ड मैन माने कठिन करा जाय पंचिंग करा जाय हला तापर देखो स्क्राइबर आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज स्क्राइबर मध्ये डिफरेंट शेप एंड साइज रो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड one is the plane scriber तो एटो आमे कोन होचे प्लेन स्क्राइबर एटा होचे हमर प्लेन ए प्लेन स्क्राइबर कोन अछि तो प्लेन स्क्राइबर ऊपर आमे पढिया पूरा डिटेल्स ला अछि हला तो स्क्राइबर होची एबी स्क्राइबर आउट मुझे संकी डिवाइड कर दोची देखो स्क्राइबर आउट होची स्क्राइबर इज मेड ऑफ हाई कार्बन एंड दैट शुड बी हार्डन स्क्राइबर रो कॉन्टेंगल्स स्ट्रेट किमा बेंड सो 12 डिग्री टू 15 डिग्री तारा एंगल्स रही एटा होछ द प्लेन स्क्राइबर एथि द्वारा हम कोन करा दे आर काम होची टू एग्जैक्टली और एक्यूरेटली और क्लियरली ड्रॉ द लाइंस एंड प्रोजेक्ट द वर्क प्रोजेक्ट ऑफ वर्क एथि होची स्क्राइबर तापर आसे देखो हमरा डिवाइड ए डिवाइडर हमरे कोन रहला टिके छाड़ देली मो स्क्राइबर टा को स्पेसिफाइड करा जायछि तार टिप पॉइंट टू बॉटम पॉइंट हला स्पेसिफिकेशन जे थिला तार पर्पस आउट टू तारला हाउ टू यूज ऑफ वन दिन जिंस कोइ देति हमति तार स्पेसिफिक अछि स्ट्रेट पॉइंट टू बेंड पॉइंट जेटी एक्जेक्टली लेंथ अछि हला 125 mm लेंथ था सेला अछि स्क्राइबर स्पेसिफिकेशन ता और मेड अप होछि हाई कार्बन स्टील और हार्ड अदर यूज तुम कहली दैट शुड बी यूज इन a flat surface and to draw a perpendicular line or parallel ताकि देखिए આપણે डिवाइडर को सेक्टर में यूज करते ना पार्ट्स विषय में जाने डिवाइडर यूजेस विषय में डिवाइडर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइडर जाने इंपोर्टेंस यूनिट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट होते देखिए इंपोर्टेंस यूनिट्स मु तुमको ए जो हमर अछि डिवाइडर जूम करी हमने देखिए हला जो तो एक पॉइंट आछि तो तुमके ई विषय का पूरा डिटेल्स करी फर्स्ट देखिए नेम द हला name the parts of divider parts तो अच्छी divider को से पढ़ी तो अपन पूरी देखिए divider are used for scribing circuit and for transforming and stepping for distance ये तुमने पूरा क्लियर बोल दिया scriber का हमारा circuit माने मुझे आर्क माने कि गोटे सर्किट भीतर गोटे तो बॉटम बाउंड्री भीतर थाए एरो आर्क एंड फॉर द ट्रांसफर माने गोटे साइड रो अन्य साइड को देखे वाला गोटे ट्रांसफर हेले तापर होची स्टेप एंड डिस्टेंस एबे गोटे लाइन एई काटला तार पैरेलल लाइन पर आउ काटिया तार पैरेलल लाइन से एई काटे हेले एई काटे जो सेक्टर रे हम पैरेलल लाइन काटिला तो स्क्राइबर रो विभिन्न प्रकार स्टेप होची एई डिवाइडर ए जो डिवाइडर रहला देखो ये कोन जो भला अब देखि जो डिवाइडर का ये हम लुक लाइक this type of figure hala divider are used for scribing circle arc for the transforming and step and distance एती काम में हमें डिवाइडर का यूज करू छे अब देखो डिवाइडर आर अवेलेबल विथ द जॉइंट्स हाला गोटा होचे प्लेन डिवाइडर का हमर टू टाइप्स अछि दी प्रकार डिवाइडर हमर अछि कोन कोन गोटा होचे प्लेन जॉइंट एटा अछि बा हाला आ होचे प्लेन जॉइंट एटा अछि दी प्रकार डिवाइडर अछि कोन देखो एटा होचे हमर प्लेन जॉइंट डिवाइडर एटा होचे हमर प्लेन जॉइंट डिवाइडर राइट हला मो देखिबी तळु अछि स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर एटा होचे हमर फ्रेम टाइप डिवाइडर फ्रेम जॉइंट हला फ्रेम जॉइंट डिवाइडर आउ होचे स्प्रिंग हला दी मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइडर विथ दिस टीवी एटी गोटे जिंस आसला कोन डिवाइडर का हम मेजर समझ कोइलो टेस्ट टाइप ऑफ सर्किल हो तो किछ डायमेंशन है ठीक तो गोटे जिंस एटी गोटे आसे with the help of divider
with the help of steel rule रे प्रथम मेजरमेंट नंबर तो हमको जति आर दरकार जति स्टेपिंग ପାଇଁ डायगोनल दरकार बा जति स्टेप ପାଇଁ पैरेलल लाइन दरकार सब हम कोन करते हम स्टील रूल विषय पढ़े स्टील रूल अपना नेला पर कोन करे ताको सेटअप करे बिल्डिंग सेटअप हो किछि एमएम रो डायमेंशन नहीं हला ताको कोन करली सेंटर ऑफ द पॉइंट रखी गोटे लेग वन लेग और राइट लेग लेफ्ट लेग को राइट लेग राइट लेग को डायमेंशन छी वो ताको आर्क काट करे सेंटर काट करे पैरेलल काट करे वर्टिकल काट करे जब साइज मते करे किंतु आर कुछ स्पेसिफिकेशन मते अछि देखो साइज the size of divider range between to 50 mm to 200 mm eta मन रखो size of divider होचे 50 mm to 200 mm भितर आबो चलो तुम तो कहली जे सेम जेटा तुम देखा अछि से हां और तर पार्ट्स को देखा अछि देखो तरा मु फिगर पार्ट्स देखै दी छला देखो एटा होची तुम जे देखै दिली फ्रेम जॉइंट डिवाइडर एटा होची तमरो स्प्रिंग स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर the spring joint divider को किमा फ्रेम जॉइंट डिवाइडर एग्जैक्टली पार्ट्स होची से खाली ए दिगा जिंस होता देखो टोटल होची साइज टोटल होची साइज रे तो देखो एक तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर एटा होची पाइवट बार एटा होची लेग ऑफ टिप ए पाइवट बार को तीन होची साइज एटा होची सी तारे एटा होची स्प्रिंग हला सर्कुलर बॉल नकल नट वाशर एंड बेल्स ए सबटा रूल्स गोटे पास जोडा कि आमे एप्ली आको देखि छे और डिवाइडर खान ए स्प्रिंग जॉइंट आउ फ्रेम जॉइंट रे डिफरेंस को छै स्प्रिंग जॉइंट कोन करिया बोलो स्प्रिंग जॉइंट रे जो बॉल नट अछि ताको आमे टिके बोलेले से कोन करे धीरे धीरे एक्सपेंड हो और धीरे धीरे क्लोजनेस हो किंतु फ्रेम जॉइंट रे कोन करिया बोलो आमे लाइक दिटा को एक्सपेंडेशन करिया पड़छि बा क्लोजनेस करिया पड़छि किंतु स्प्रिंग जॉइंट रे गोटे बेनिफिट्स कोन जदि आमे जो नकल नट अछि ताको जदि टिके रिमूव करना पछको बा बैक साइड किबा आगो को फॉरवर्ड करिया ताले ये कोन करे ओपन और क्लोज इजीली हे करियो तो फ्रेम जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट यदि डिफरेंस किंतु मोस्ट ऑफ आमे सब वर्क रे ए जो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का ही यूज करछो हला साइज कोले कम 50 mm to 200 mm हला तापर देखबा हला देखो the distance of the point of the center of vacuum to roller to in the size of divider ए जो सिकोला circulum distance रे हला से कोन कहते distance from the point to the center रे रहला the circular roller pivot is the size of divider माने ए जो pivot size to टोटली जतो आमे स्पेसिफिकेशन करिया डिवाइडर को तब पाइवट बार को ले पाइवट बार को स्प्रिंग जॉइंट जो डिवाइडर जो ले होचे सेति को ऊपर आमा एका स्पेसिफिकेशन दाउचे आसा पाइवट बार को टिप पॉइंट एति होचे तार स्पेसिफिकेशन आ सब पार्ट्स विषय को तुमसे को एग्जैक्टली कह देली हला और को डिवाइडर पॉइंट इज अ ब्रेक पॉइंट हला जोड़ा ब्रेक पॉइंट ये जो डिवाइडर एंगल्स अछि ये 30 डिग्री ऊपर यूज अछि 30 डिग्री ए जो डिवाइडर एंगल्स अछि ये 30 डिग्री रे करेक्ट लोकेशन रो अछि सेटिंग द डिवाइडर पॉइंट ब्रेक पॉइंट्स बार 30 डिग्री आर यूज हमें डिवाइडर के बडे एंगल अछि तुम सब तो कह दियो हम डिवाइडर के एंगल अछि तो बुझिया ही अछि तार कोन एंगल नै डिवाइडर के बडे स्पेसिफिकेशन कराय छै जोरा के एग्जैक्ट 30 डिग्री अनुसार तक मैन्युफैक्चरिंग करा छै टू लेंथ ऑफ डिवाइडर should always be equal length ये जो दिखे जाके लेंथ अछि always equal length रहे divider has specified the types of joints and length types of joint और length अनुसार स्पेसिफिकेशन कराय छै कोइ दिन बोलतो लेग और पाइवट बार ऊपर हम स्पेसिफिकेशन कराय छै किंतु एही भाषा रे कहै छै divider has specified types of joints and length types of joint को प्रकार joint दै छै और को टाइप रो डिवाइडर अछि हैला से हो जा दी प्रकार डिवाइडर तो डिफरेंट और जो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हां तब देखो डिवाइडर फॉर्म शुड बी पिक शार्प इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फाइन लाइंस ठीक है शार्पनिंग एंड ऑल्सो इज बेटर देन शार्पनिंग बाय द ग्राइंडिंग विल मेक द पॉइंट सॉफ्ट इट्स अ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग जदी मध्य किछि यूज करला परे तो ए जे उडे मटेरियल्स
चिन्ह चलला पर तो एरर आसबे निश्चित किछ एरर है सेटा कोन करे बाय द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन जो आमे देखि कि ओ कमार माने बाडे लोक माने कारपेंटर लोक माने गोटे पत्थर रखियानी से घसी की हला ता फ्रिक्शन करी से माने शार्पनेस बढ़ाती जो मटेरियल संगे टूल्स यूज करू से बड़ी लाइमस्टोन गुडे वेस्टोन है जोडा कि आमे ए स्क्राइबर पॉइंट बा डिवाइडर पॉइंट को आमे शार्पनिंग करि परला तापर आसला देखो अपना डाटम स्लाइड्स देखो स्क्राइबर तुम जानि लो स्क्राइबर लाइन काटते पल्ला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आर्क सर्किल ट्रांसपेरेंट सब कर तापर आसला डिवाइडर रे काम कोन ना डिवाइडर मध्ये ए स्क्राइबर रे आमे कोन करथले हेल्प ऑफ पेन किबा पेंसिल भाबरे काटथले लाइन्स पई यूज करथले पेन पेंसिल भाबरे तो लाइन काटे डिवाइडर आसला कोन ना स्टेप किंदी आमे लाइन्स काटिबा स्टेप अनुसार किंदी आमे सर्किल काटिबा किंदी आर्क काटिबा डिवाइडर हेले जो जिंस काटिबा को भली काटिबा हला ए जिंस तक को खेतरे से जिंस रा होची डाटम ए डाटम लाइन बोले दी डाटम लाइन डाटम शब्द कोन किछि लाइन ए बोले रिप्रेजेंटेटिव लाइन होची एटा कोची डाटम लाइन एजा को पॉइंट के कटा जाय छे ना हेल्प ऑफ स्क्राइबर एंड हेल्प ऑफ डिवाइडर मु कहर आकर कारण होची स्क्राइबर आ डिवाइडर कहिछि कोन बे ना ए जिंस रा होची डाटम लाइन ए लाइन दा में काटिछि का साथे काटिछि स्क्राइबर लाइन काटिछि स्क्राइबर हेल्प ऑफ स्क्राइबर को लाइन किंतु प्रकृतर मेजरमेंट किए देला डिवाइडर